जो एक टीचर की स्किल्स हैं यानी सलाहियात हैं वो बेहतर की जा सकती हैं। सो वो एक होपफुल लर्निंग रही है कि इफ द टीचर स्टार्ट्स ऑफ विद वीक स्किल्स, एफर्ट के साथ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ उनकी स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं। यानी हर टीचर इंप्रूव हो सकता है और उसकी वजह से बच्चे बेहतर पढ़ सकते हैं। इन दो लर्निंग्स की बुनियाद पर लम्स चाहता है कि वो टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूव करने में अपना किरदार प्ले करे। अब हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स महसूस होते हैं करने में, क्योंकि हम चाहते तो हैं कि हम इन पर्सन कोर्सेज दे सकें, बट इन पर्सन कोर्सेज देने के लिए टीचर्स को कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, लम्स स्पेसिफिक सिटी यानी लाहौर में मौजूद है, हर किसी की रसाई एक्सेस एक सिटी के लिए डिफिकल्ट है। लम्स के जो इन पर्सन कोर्सेज हैं उनकी कॉस्ट बिकॉज ऑफ द रेंट, द बिल्डिंग, द इंस्ट्रक्टर, वो ऑलमोस्ट आई वुड से कि इन पर्सन कोर्स लम्स में 70,000 कॉस्ट करता है, जो कि अफोर्डेबल सबके लिए नहीं होगा। तीसरी चीज ये है कि जो कोर्स के टाइमिंग्स होते हैं वो शायद सबको सूट ना करें। कुछ लोग फॉर एग्जांपल सुबह टीच कर रहे होते हैं, उनके लिए सुबह क्लास लेना है, या शाम को अगर काम कर रहे हैं शाम को क्लास लेना मुमकिन ना हो। इस सब को ज़हन में रखते हुए लम्स ने सोचा कि हम ऐसे कोर्सेज बनाते हैं पार्टनर्स के साथ जो वन कम फीस के होंगे, लोग अफोर्ड कर सकें। सेकंड, वो ऑनलाइन होंगे ताकि कोई भी कहीं भी बैठ के ले सके। तो ये बेसिकली इसके पीछे एक विजन था अनफ। थैंक यू जैन। एंड आप हमें बताना चाहेंगे कि व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स? जी एब्सोल्युटली, इसमें आप प्राइमरीली 4 चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में सबसे पहले आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपके जो सॉरी, थोड़ा सा दिस सम नॉइज ऑन अ बैकग्राउंड, यूनिवर्सिटी में होने का नुकसान है ये। सबसे पहले आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आप अपने वक्त में कर सकेंगे, एंड दैट्स अ बिग एडवांटेज कि इट्स अ कोर्स दैट यू कैन एक्सेस इजीली व्हेनेवर और वेरेवर यू कैन। सेकंड ये है कि जो कोर्स को जिन लोगों ने बनाया है ये वो हैं लम्स के नॉलेज प्लेटफॉर्म के वो एजुकेशन के एक्सपर्ट्स, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस और जो दुनिया तहकीक और रिसर्च के मबनी पे चीज़ें बता रही है कि टीचर्स का जो तदरीसी अमल है उसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेहतरीन प्रैक्टिसेस क्या हैं। So this course is based on both the expertise of these individuals from LUMS and KP, and but also at the same time on the research across the globe. इस दुनिया में बाकी क्लासरूम्स में हमें क्या पता लग रहा है कि अच्छा टीचर एग्जैक्टली कैसे पढ़ाते हैं और क्या करते हैं। आपको एक और फायदा ये है कि इसको देखने के बाद आप जायजा ले सकते हैं अपनी तदरीस का, एंड you'll be able to evaluate whether you may already be doing, तो वो वैलिडेट हो सकती है। एंड एट द सेम टाइम वो आपको नए सजेस्टेड स्ट्रेटजीज भी रेकमेंड कर सकते हैं जो कि आप पिक एंड चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर कॉन्टेक्स्ट। एंड ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंटली ये आपको एज अ टीचर एज एन एजुकेशन फील्ड में ग्रो करना, उसमें बहुत आपको हेल्प कर सकता है। सो आई वुड से दीज आर द मेन एडवांटेजेस। Perfect. Thank you so much, Zen. I would like to now invite Ms. Sabahat Qadri, who is the head of secondary product at Knowledge Platform. Sabahat, I would like you to tell us about what Knowledge Platform does and then what this course is about. We also have a question from the audience, but maybe we can address it after you have spoken. Thank you, Anam, and Assalamu alaikum, everyone. आप सबका शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक हमारी ऑडियंस बढ़ती जा रही है, which is always excellent. तो मैं नॉलेज प्लेटफॉर्म में पिछले 5 साल से हूँ। नॉलेज प्लेटफॉर्म वैसे तकरीबन 2000 से इन ऑपरेशन है, एंड वी स्टार्टेड ऑफ क्रिएटिंग कॉर्पोरेट कंटेंट। तो यू नो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज के जो लर्निंग कोर्सेज होते हैं उस तरह की चीज़ें हम लोग पहले बनाते थे, लेकिन 2012 और 13 में हमने शिफ्ट किया है टू एजुकेशन, और उस वक्त से हम लोग प्राइमरली एजुकेशनल ही कंटेंट बना रहे हैं। हम लोग और कुछ बनाते नहीं है। हमारा एजुकेशनल कंटेंट का the philosophy behind developing educational content is basically के schools में बच्चे यहाँ पर उनको education उनको पढ़ना I think कोई खास it's not interesting for them, so they don't find it fun, they don't find it engaging. School एक chore है, एक it's a difficult thing for them to basically go to school to learn,
and they'd much rather be doing anything else, in fact. So we wanted to create content that was very engaging and very fun and made learning fun. So since then, we started creating videos, we started using games. We did assessments that had a lot of feedback in them as well, so that, you know, everything that you did taught you something, but without the lecture style जो हमारे पास बहुत ज़्यादा common है ना, कि आपकी टीचर एक जगह खड़ी हुई है और बात कर रही है और बच्चे सुन रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं. तो हमारा फोकस शुरू से यही था, और जब हम लोग प्राइमरी कंटेंट बनाने के रिसर्च कर रहे थे, तो हम लोग यही देख रहे थे कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेक लर्निंग सो इंटरेस्टिंग दैट एनीवन कैन डू इट. तो हमने 5E फ्रेमवर्क पे अपना प्राइमरी कंटेंट बनाना शुरू किया था. उसमें हमें थोड़े से मसले आए थे जब हम लोग डिप्लॉय कर रहे थे, क्योंकि टीचर्स को समझ में नहीं आता था कि आपके पास ये इतने सारे कंटेंट ऑब्जेक्ट्स एक लेसन के लिए क्यों हैं, आप इस स्ट्रक्चर में क्यों जा रहे हैं, आप सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते हैं कि ये आपका वर्ब है और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ब. Why isn't that enough? So we decided that we would actually train teachers here on the 5E model, on the 5E framework, and that's where this course came out. LUMS was very interested. LUMS wanted to launch their own online courses, and we thought it would be useful for teachers कि अगर आप 5E framework के बारे में सीख रहे हैं तो उसके साथ साथ आपके पास LUMS का certificate भी आ जाएगा. So that's why we also collaborated with them. We were very happy to work with them on this. Does that explain a little bit about what we're doing? I think so, Sabahat, yeah. All right, so then let me tell you a little bit about the 5E framework itself. 5E literally आपका 5 E's हैं: engage, explore, explain, elaborate, evaluate. और ये process basically है कि आप अगर बच्चे को किसी भी चीज, कोई भी चीज सिखा रहे हैं, आप पहले उनको engage करें और खुद से थोड़ा सा explore करने का मौका दें. तो वो खुद से सोचें इसके बारे में, बेशक गलत सोचें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. The 5E framework, in fact, very much wants students and wants teachers as well to make mistakes, because that's where you learn. You learn when you make mistakes, and then you get better and you don't repeat those mistakes. So the 5E framework says that जब आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं, आप पहले बच्चे को engage करें, और ये किसी भी चीज से कर सकते हैं. आप कहानी सुना सकते हैं, आप एक सवाल पूछ सकते हैं, आप वीडियो दिखा सकते हैं. फिर उनको ये मौका दें, उनसे एक सवाल करें और उनसे कहें कि आप खुद इसके बारे में सोचें कि ये क्या हो सकता है. कुछ भी बताने से पहले, कुछ भी समझाने से पहले आप उनको वो खुद मौका दें, क्योंकि उनके अपने प्रीकंसीव्ड नोशंस होते हैं, उनके पहले से कहीं और से सोचे हुए आइडियाज होते हैं जो हो सकता है गलत हो. तो टीचर को भी पता चल जाता है उसमें कि बच्चों का क्या अंडरस्टैंडिंग है इसकी, और उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे फिर एक्सप्लेन पे जाते हैं. एक्सप्लेन करके उसको एलैबोरेट भी करते हैं थोड़ा सा वाइडर वर्ल्ड के बारे में, और थोड़ा सा एप्लीकेशन करते हैं इसमें, एंड देन यू इवैल्यूएट देम. So the 5E model, the framework as such, works very well to turn your standard lecture style teaching into a student-centered teaching approach. I think, Nimra, should we, yes, move on to the next. So this is the course itself, ilmex.org पे आपका ये URL है, ilmex.org/5E model/sign up. यहाँ पर आप जाके कोर्स ले सकते हैं. ये एक ऑनलाइन कोर्स है और completely self paced कोर्स है, यानी आपको किसी के थ्रू नहीं करना पड़ेगा. आप खुद जाके अगर करना चाहें, साइन अप करें, पैसे दें और आप शुरू कर दें. But let me take you through the course itself, क्योंकि हमने भी जो कोर्स बनाया है थोड़ा बहुत 5E मॉडल के बेसिस पे ही बनाया है. And Nimra, can you take us through the course so that we can show our attendees? Okay, so एक दफा आपने साइन अप कर दिया, और साइन अप के लिए हिना है हमारे साथ, इलमैक्स के साथ, तो वो आपको उसके बारे में समझा देंगी. मैं आपको पहले थोड़ा कोर्स के बारे में बताऊंगी. एक दफा आप कोर्स के पेज पे आ जाएं और आपने साइन अप कर लिया है, आप कोर्स शुरू करेंगे तो आपको ओवरव्यू में पूरे कोर्स का आउटलाइन मिल जाएगा. इस आउटलाइन में आप देखेंगे कि 7 मॉड्यूल्स हैं.
7 मॉड्यूल्स में हम हर फेज के बारे में इन डेप्थ आपको बताते हैं, उसके डिफरेंट एक्टिविटीज बताते हैं, किस तरह इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या उसके मल्टीपल चीजें होती हैं जो हर फेज में आपको करने चाहिए, पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। तो अगर आप लेफ्ट पे देखें जहां नुमरा का कर्सर है, I don't know if you guys can see it, I hope you can. लेफ्ट पे आपके पास हर फेज का एक मॉड्यूल का हर मॉड्यूल का के टाइटल्स आ रहे हैं, एंड इफ वी क्लिक ऑन वन ऑफ देम, एनी वन, तो इंगेज फेज में हमारे पास चंद वीडियोस हैं, असेसमेंट्स हैं, गेम्स हैं और रीडिंग्स हैं। अगर हम लोग पहला वाला वीडियो जो है द पर्पस ऑफ एंगेज इन एक्टिविटी, जी इस पे क्लिक करें। हमारे पास हर मॉड्यूल में वीडियो बेस्ड इंस्ट्रक्शन है। तो कैन वी प्ले दिस? आई थिंक साउंड भी आप अगर शेयर कर सकते हैं तो लेट्स जस्ट वॉच अ स्मॉल क्लिप ऑफ दिस। In this video, we will learn about the first phase of the 5E instructional model, Engage, the distinctive features of Engage, the purpose of Engage, the role of teachers and the role of students in the Engage phase, and the strategies to activate students' prior knowledge and hook their interest. Miss Aisha, when I introduce a new concept in class, I have a hard time with my students. They either start fidgeting after a while or just respond blankly. Thank you, They Nura. I think organize- that's plenty. Nor should they only offer Actually, questions are there about problems faced during the class, and yeah, I think that's one of the questions. So, हमारे हर मॉड्यूल में आपके पास इस तरह के tips and tricks होंगे and actual solutions मिलेंगे आपको on different phases of the 5E framework. अगर आपके students शुरू में बहुत बोर्ड हैं तो उसके लिए आपके एंगेज फेज में बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को इन लाइन या एंगेज करने के लिए। अगर बीच में बहुत ज्यादा उनका अटेंशन डाइवर्ट हो रहा है या वो सुन रहे नहीं है तो उसमें भी आप एक्सप्लेन में जा सकते हैं। एक्सप्लेन में बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जिस पे हम लोग बताते हैं कि आप एक ग्रुप को किस तरह एक्टिव एंगेज रखें, एक इंडिविजुअल किस तरह engaged रखें और interested रखें. And then you have, for example, I think earlier there was a question on different students with different skills or different levels of understanding, I guess, in one classroom. अगर हम इसको differentiated instruction कहते हैं। आप एक क्लास में अगर 30 बच्चे हो सकता है 10 काफी वीक हों, 20 एवरेज हों, 10 एवरेज हों और 10 बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हों, तो उन सबको एक ही लेवल पे पढ़ाएंगे तो फिर आपको हमेशा प्रॉब्लम्स होंगी स्टूडेंट्स को मैनेज करने में, बिकॉज some will be bored, some will finish quickly, or some will find things too difficult and will just act out rather than actually trying any harder because they feel perhaps that they don't have any kind of focus or attention from the teacher. उसके लिए differentiated instruction के लिए हमारे पास एक पूरा section है elaborate में, which will teach you how to differentiate your instruction. 4 मुख्तलिफ चीजें हैं basically जिसके basis पे आप differentiate कर सकते हैं और अपने classroom को manage कर सकते हैं. So each one of our modules will have a video that's similar to the one that I've just shown. And that video will basically walk you through the basics of that phase and activity ideas and different ways that you can manage your class as well. After every video, हमारे पास एक assessment आता है. Can you click on the assessment? तो हर असेसमेंट हमारा जो है ये MCQ असेसमेंट है, लेकिन आप अगर कोई भी असेसमेंट अटेम्प्ट करें तो आप जरूर स्क्रॉल करके सबमिट करिए, और स्क्रॉल करके अगर आप नीचे जाएंगे तो आपके पास बहुत इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होती है कि ये सवाल का जवाब क्यों गलत है या क्यों सही है.
और हमारे हर क्वेश्चन के साथ ये है। तो हर वीडियो के बाद आपके पास 5 असेसमेंट क्वेश्चंस आते हैं, एंड देयर नॉट असेसमेंट क्वेश्चंस इन द सेंस के हम लोग देख रहे हैं कि आपका क्या स्कोर आया है। दिस इज अनदर टीचिंग टूल. We use all of our assessments as formative assessments. Assessment के अलावा, can you scroll down? Other than videos and assessments, we have readings. Click on readings. ठीक है, अब हर मॉड्यूल के साथ हमारे पास हम 3 से 4 PDFs दे रहे हैं आपको पढ़ने के लिए। ये PDFs आप डाउनलोड करें एकेडमिक जर्नल से, ये दूसरे पूरी दुनिया से इनफैक्ट। There are research papers here. There are also pilots that people have done, or reports pilots पे कि हमने अगर 5E framework कहीं पर implement किया है तो उसके क्या results आए हैं और किस तरह implement किया है। इसमें बहुत सारा information available है। ये काफी लंबे हैं तो उसके लिए हमने एक article review भी दिया हुआ है। article review भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमने समराइज कर दिया है जितने भी PDFs उस कोई भी मॉड्यूल में होंगे उसकी एक समरी होगी। आप चाहें तो सिर्फ आर्टिकल रिव्यू पढ़ के फिर देखें कि कौन सा वाला आर्टिकल आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और फिर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, या आप पूरे आर्टिकल्स पढ़ लें बेशक। और फिर इसके बाद भी एक क्विज है, एंड जस्ट लाइक एनी असेसमेंट आफ्टर वीडियो, ये भी बहुत ही शॉर्ट क्विज होगा और इसमें भी वही MCQs होंगे और आपके पास significant feedback भी आ जाएगा इसके लिए। But also, other than readings and videos, to keep you even more engaged, because we think this is something we should be doing, is we have games. Click on games now. हर मॉड्यूल में कम से कम 3 games हैं और ये games related हैं to the module itself. It has information that's specific to this, और आप अकेले खेल सकते हैं या आप जैसे जंगल जिम है इसको भी आप एज अ ग्रुप खेल सकते हैं। अगर आप दूसरे टीचर्स के साथ ये कोर्स कर रहे हैं तो फिर जंगल जिम इज एन एक्सलेंट एक्टिविटी टू डू विद अदर पीपल। वैसे तो अकेले भी खेल सकते हैं, सारे गेम्स अकेले खेल सकते हैं। एंड देन एट द एंड ऑफ एवरी मॉड्यूल वी हैव अ चेक पॉइंट। sorry, we also have the most important thing. आपके गेम्स के बाद हमारे पास हर मॉड्यूल में एक वीडियो है जिसमें लम्स के प्रोफेसर्स और टीचर्स अपना एक्सपीरियंस हमें बताते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स एक्चुअल टीचर्स जो एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे हैं 5E फ्रेमवर्क को, अपना तजुर्बा और अपना एक्सपीरियंस और अपने जो स्ट्रैटेजीज हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके बारे में बात करते हैं। This is all from teachers and professors who are working in the field or are from LUMS. And then after that, this is your complete module. At the end of the module, you have a checkpoint. Checkpoint भी चंद सवाल हैं, आप पूरे जितने भी इसमें videos हैं या जितने भी games हैं या और भी readings हैं, उन सबसे questions लेके आपका एक module का checkpoint लेते हैं, just to see how well you've done. Again, it doesn't keep score at any point. I mean, आपका score भी आ जाता है, लेकिन that's not the purpose of these checkpoints or of the course. The purpose is कि आप सीखें इसके बारे में। अब there are 7 checkpoints. हमारे पास एक lesson planning का भी module है, उसमें हम आपको बताते हैं कि lesson planning किस तरह करना चाहिए। हम थोड़े से samples भी दिखाते हैं आपको lesson planning के लिए। And just like the other checkpoints, आपके पास reading है, game है और module checkpoint है। Now there's one more thing, Namra, sorry, that I want to show, and if you scroll all the way down, I'll point this out. So there's इसमें एक tab है lesson examples के नाम पे, इस पे click करें। हमने जो content बनाया था जिसके basis पे ये 5E framework का पूरी training course निकला है, हमने जो original content बनाया था उसके हमने थोड़े से samples डाले हुए हैं। इसमें आपके पास English के, math के और science के samples हैं। They are just videos of the content, and you can go through all of these. बेतहाशा samples हैं। वैसे तो ये framework पहले
साइंस के लिए बना था, because they wanted kids to be more active in science, खुद experiment करने के लिए या explore करने के लिए, hypothesize करने के लिए। वो छोटी सी उम्र में उनको चाह रहे थे कि वो उनकी वो आदतें आ जाएं उनमें ना, कि आप शुरू से क्वेश्चन करना शुरू करें, शुरू से क्रिटिकल थिंकिंग आप में हो, ताकि आप आगे जाके अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो you're not studying it passively, you're doing it actively। तो उसको इंग्लिश में और मैथ में लाने के लिए हमें थोड़ा बहुत सोचना, खुद सोचना पड़ा था। और मेरे ख्याल में आप लोग भी अगर करेंगे तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि साइंस के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से ये 5E मॉडल सेटअप हुआ है, इंग्लिश के लिए भी और मैथ के लिए भी, लेकिन हो सकता है। और अगर आपको कोई भी आइडियाज चाहिए तो you can go through all of these lesson examples and get some ideas on how to implement the 5E course। जी, इकरा का एक मैसेज है, there's no sample for social studies। नहीं, there isn't, लेकिन आपके साइंस और सोशल स्टडीज का फॉर्मेट मोर लेस एक ही हो सकता है। आपके क्वेश्चंस ऑब्वियसली थोड़े से डिफरेंट होंगे और आपके एंगेजमेंट के एक्टिविटीज शायद मुख्तलिफ हों, लेकिन उसके एग्जांपल्स भी हमने, एक्टिविटी आइडियाज भी अपने कोर्स के मॉड्यूल में डाला हुआ है, एंगेज के मॉड्यूल में होगा। जी, yes, social studies is very boring। That's true। बायोलॉजी और फिजिक्स हमारे पास साइंस के सैंपल्स हैं, हमारे पास बायोलॉजी और फिजिक्स स्पेसिफिकली के लिए नहीं है। Right, and that's pretty much the whole course वैसे। Teacher of history and geography, students avoid to study, बिल्कुल। लेकिन देखें, आप जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग करेंगे उनके लिए, उतना ज़्यादा आपके स्टूडेंट्स भी पढ़ना चाहेंगे, and that should be the goal of the 5E model। In fact, इसके बहुत सारे benefits भी हैं, और अगर हम लोग थोड़ा बहुत इसके benefits के बारे में सोचें, सबसे पहले तो the form of the course itself, क्योंकि ये लम्स का कोर्स है और ऑनलाइन है, it's done at your own pace। आप अपनी मर्जी से घर पे बैठ के चाय पीते वक्त या लोगों से बातें करते वक्त भी ये कर सकते हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, ऐसी चीज नहीं है कि टाइम बाउंड है। आप किसी वक्त भी 5-5 मिनट के उस पे आप पूरा कोर्स कर सकते हैं। You don't have to sit down for the entire duration of the course and do it in one go, and you're not bound by a teacher's schedule or an instructor's schedule। So that's one big benefit। And then secondly, देखिए, अगर आप sorry, can you go back one, Nimra? I think you've skipped। G, you need to change, this will help you change your teaching practice from teacher-centered to student-centered। बजाय इसके कि आप lecture दें, this will teach you how to get students to do the most of the work themselves, which I think most teachers should be interested in। And of course, because this is a LUMS course, you get a certificate of completion from LUMS, which has a lot of prestige and a lot of value। Okay, now Nimra, you can go on। We've also explained modules में that you can engage students of all levels। हम लोग अक्सर समझते हैं, in fact पूरे दुनिया में यही होता है ना, आपका focus early childhood years पे होता है कि how can we make it interesting for early childhood years। आपके primary बहुत engaging होते हैं, और फिर 6 पे आके एकदम से ऐसा लगता है जैसे दीवार पे you've just hit a wall and you're just like, oh my God, this has to be boring, it has to be straight। It doesn't, it should be interesting for students all the way, from nursery all the way to university level पे भी बहुत interesting कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत सोचें इसके बारे में। और ये थोड़ा सा flexible framework है, you don't have to do all 5 of them। You can take things that are of use to you and that you are able to do, क्योंकि थोड़ा time consuming है, तो हो सकता है आप पूरे नहीं कर सकते, so you can take pieces that would be relevant to you and just use those। And this is also based on some of the latest research and development in pedagogy, so that I think is a huge benefit। You're not हमारे पास अक्सर अब तो I don't know अगर if it's still the case, लेकिन अक्सर हम लोग सुनते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड जो है अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी जो वो नहीं इस्तेमाल करते थे, वो हम जैसे लोगों को बेच देती थी, तो we'd always be a step behind। And this is not the case, क्योंकि हम लोग खुद अपनी टेक्नोलॉजी अब बना रहे हैं और खुद अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, so we're no longer relegated to being second-hand citizens। Sorry, go ahead, Nimra, I think that's pretty much it।
This is just the course details. 5 से 7 दिन on average लगना चाहिए. हो सकता है कि आपको 2 महीने भी लग जाएं. It's not a barometer of how long it should take. It's self-paced and online, and it's less than 5,000 rupees. Sabahat, one question we have is around assessment submission from Farwa. So, Farwa का सवाल है, if I can read that. Farwa का Assignment सवाल है कि submission? No. जी, is there Assignment any submission assignment submission? Yeah. नहीं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्टर लेड कोर्स नहीं है. आप खुद से करते हैं, तो इसमें सिर्फ MCQs हैं. आप असेसमेंट MCQs लेंगे, आप वो सबमिट करेंगे, वो स्कोर आपका रखेगा कि आपने कितना स्कोर किया था. लेकिन अगर आप फिर से लेंगे और आपका बेहतर स्कोर आ जाएगा, then it'll overwrite the older score. लेकिन कोई असाइनमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें. Any other Perfect. questions? So I think कि हम आगे बढ़ सकते हैं, and then we'll come back to the questions as they come. So I would like to now invite Sir Amjad Ayub. Sir Amjad is from the Badri School, which has been one of our schools that has been using the knowledge platform learning solution really, really well. And Sir Amjad himself is a champion of using technology in schools and classrooms. So Sir Amjad, we're very, very happy to have you here. If you can switch on your video, or maybe your video is switched on, I can't see you. Okay, yeah, great. So Sir Amjad, over to you. आपने ये कोर्स किया हुआ है, आप टीचर्स को क्या एडवाइस करेंगे? ये क्यों करना चाहिए? आपको इससे क्या फायदा हुआ है? आपने ये किस तरह से किया था, जो आप एडवाइस टीचर्स को देना चाहें? Over to you. Thank you very much. Assalamu alaikum to all of you. And I'm pretty hopeful that you are all fine. 5E model course. Well, I would like to start with my introduction. This is Amjad, and I'm a physics teacher, and I'm coordinating for grade 9 and 10 in Badri High School. जब पढ़ाई शुरू होती है, तो सबसे पहली और अहम तरीन बात ये है that when I have started my career as a teacher, so हमें Bloom's taxonomy सिखाई. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो बेस करती है, जो की है किसी भी लेसन को प्लान कर. लेकिन वक्त जाहिर सी बात है आगे बढ़ता है, चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, बदलती जाती हैं, अपडेट होती जाती हैं. तो उसी के अंदर, क्योंकि हम लास्ट 3 साल से नॉलेज प्लेटफॉर्म के साथ अटैच थे विद आवर स्कूल फॉर ग्रेड 9 and 10, तो हमने उनका एक मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है दैट वी आर यूजिंग इन ग्रेड 9 and 10. So when I got the opportunity to get in for this 5E model course, so I was excited to learn something new. So I was talking about Bloom's taxonomy, that जो कि basic idea है. Bloom's taxonomy के बाद जब हम आगे आते हैं, so we have seen in many schools that they are actually disturbed with the classroom management. If you want to become the smart teacher, the teacher who is in the era of 2022, so 5E model course के बगैर आप मतलब 5E मॉडल कोर्स पढ़े बगैर आप प्लान कैसे कर सकते? This is I think about it after this course. 5E मॉडल कोर्स ऐसे शुरू होता है जी कि ये कोर्स ऐसा है जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को कवर करेगा. क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर जो कि लैप्सेस होते हैं, आप फुल टॉस बॉल डालेंगे तो छक्का पड़ेगा और वो फुल टॉस बॉल जो है बच्चा खेलेगा, और वो उसका राइट है क्योंकि आप एज अ बॉलर आप काम कर रहे हैं. इसी तरीके से जो टीचर है जब वो क्लास में जाता है तो ही हैज टू बी वेरी वेल प्लान्ड एक्चुअली, और उसमें कोई लूप होल नहीं होना चाहिए. और इफ यू वांट टू गेट योर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, जो आपका ऑब्जेक्ट है दैट यू वांट टू अचीव इन द क्लास, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप हाईली प्लान्ड हो. अब आज का बच्चा उस दौर का बच्चा नहीं है कि जो आपकी ट्रेडिशनल टीचिंग्स पे चलेगा. देयर आर मल्टीपल इंटेलिजेंस पीपल इन द क्लास. ये जो मैंने 3-4 बातें कही हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, लर्निंग मैनेजमेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट है और मल्टीपल इंटेलिजेंस, इन तमाम तर बातों को कवर करने का सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है और जो मैंने स्पोर्ट्स के बाद सीखा दैट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं कुछ एग्जांपल भी आपको दूंगा, दैट इज अ 5E मॉडल कोर्स. 5E मॉडल कोर्स के जरिए आप बेसिकली अपनी क्लास को ड्रैग करते हैं, आप ड्रैग करते हैं इंगेजमेंट से और लेके जाते हैं इवैल्यूएशन.
अब इसमें देयर आर मैनी स्टेप्स, वी हैव 5 मेजर स्टेप्स एक्चुअली। एंगेज करना, एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना, एलैबोरेट एंड देन रीच टू द मॉडल ऑफ इवैल्यूएट। इसके अंदर दैट वी कैन मेक अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज जो कि नॉलेज बेस्ड हो सकती हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो सकती हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो सकती हैं, एप्लीकेशन बेस्ड हो सकती हैं, और ये सब चीजें आपकी कवर करती हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर भी और आज के नए लेसन प्लान में। I have been working with many institutes. मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि there are good schools in Karachi, you know, all over Pakistan. Their lesson plan has now incorporated on 5E model. तो 5E मॉडल कोर्स के बगैर या 5E मॉडल को जाने बगैर किसी लेसन को प्लान करना, आई डोंट थिंक सो कि वो आज के बच्चे के लिए जो है वो नाइंसाफी है। सो वी मस्ट गो थ्रू विद इट। और जो मुझे बहुत अच्छा कोर्स लगा इसके अंदर, जो मुझे बातें अच्छी लगी दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, कि इसमें एक तो वीडियो के जरिए और इसमें क्लासरूम को वीडियो शूट किया गया। इसमें बताया गया कि भाई किस सिनेरियो के अंदर क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो हम अक्सर, क्योंकि आज की दुनिया हम कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट से बहुत अच्छा समझते हैं, तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छी चीज़ मिली मुझे इसके अंदर गेमिफिकेशंस मिली जिसमें मैं अपनी असेसमेंट कर सकता हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे और ज़्यादा अच्छी लगी, क्लोज टू माई हार्ट, इज अ केस स्टडी। जब आप बीएड कर रहे हो या एमएड कर रहे हो तो उसके अंदर बहुत अहम चीज़ के सवालात भी इसी तरह से बनते हैं कि आपको केस स्टडी दी जाए, और उस केस स्टडीज़ के अंदर यू एक्चुअली फाइंड आउट कि हम किस पॉइंट पर कैसा बिहेव करेंगे, कौन सी टर्मिनोलॉजी, कौन सी मेथोडोलॉजी अप्लाई करेंगे, और ये आप 5E मॉडल कोर्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब मैंने ये कोर्स अडॉप्ट किया, इसमें सबसे अच्छी बात ये भी कि ये आपके पास, आपके अपने पेस पर है, आप इसको कैसे लेके चलेंगे। आप अपने वीकेंड पे करते हैं, आप डेली इसको 20-25 मिनट्स निकालते हैं और इसको आहिस्ते आहिस्ते अपने पेस के साथ। बहुत से लोग जिनके पास अगर टाइम है, संडे को बहुत ज़्यादा टाइम है, देन वी कैन वर्क फॉर 90 मिनट्स और 120 मिनट्स वो काम करें और जल्द कोर्स मुकम्मल करें। लेकिन जो पेस के साथ चले, रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, रोजाना 20 मिनट 25 मिनट भी इसको देखते हैं, इसको असेस करते हैं, इसकी वीडियोस को वॉच करते हैं, दे कैन इजीली कवर द होल कोर्स। और वो 2022 के पेस के अंदर आसानी से उन टीचर्स के साथ खड़े हो सकते हैं, दैट दोज हू वांट्स टू बिकम रियली अ स्मार्ट टीचर। मैंने कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया? आई यूज्ड टू टीच फिजिक्स इन स्कूल। तो फिजिक्स आप जानते हैं कि बिल्कुल इट इज़ ऑल डेली लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करता है। मैं पास्कल लॉ पढ़ा रहा हूँ या मैं साउंड पढ़ा रहा हूँ या कोई भी ऐसा टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू माय ग्रेड 9 और 10, हर कोर्स के अंदर, हर टॉपिक के अंदर 5E को आराम से इन्वॉल्व किया जा सकता है। एंड इवन यू कैन कवर 3-4 SLOs एज वेल विद इन अ सिंगल 5E मॉडल, जो मैंने भी रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया। मेरा चैप्टर था सिंपल हार्मनी मोशन का, तो उसके अंदर मैंने एंगेज में एक अलग एक्टिविटी डाली, एक SLO कवर किया मैंने। दूसरे पॉइंट पर आने के बाद दूसरा एक्सप्लोर में दूसरा SLO कवर किया, एक्सप्लेन में तीसरा किया, एलैबोरेट में और इवैल्यूएट में जाकर मैंने तमाम जब पास पेपर्स रखे तो बच्चे सॉल्व करने के काबिल हो गए। अभी क्लास का मोमेंटम होता है, दे आर ऑल इन्वॉल्व्ड इन इट, they are just jump into towards it, that today's Sunday's class is there and we are going to learn something, but behind the class planning actually I am using the 5E model course. तो मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। एंड इवन I am training my teachers as well and I am recommending you as well to go through with this course। और इसकी मॉडल को समझें, ये आज की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर हम एप्लीकेशन जैसे मैंने बात की, मैं जितने teachers those who are involved here right now, I would like to suggest them to do this course. If you want to become a smart teacher, if you want to overcome with all the difficulties that you are facing in your classes, in the class management, in course coverage, you can easily get through with all these things easily with the help of the 5E model course. आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि the way they have designed the course, जिस तरह से कोर्स डिजाइन हुआ है, एक के बाद एक SLO को कवर करना और उसके बाद असेसमेंट करना, इसके बाद गेमिफिकेशन करना, यानी आप बोर नहीं होंगे डेफिनेटली। मैं इसको आपको गारंटी कहता हूँ, बिकॉज़ आई हैव डन दिस कोर्स, मैं गारंटी कह सकता हूँ दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी बोर। आप इसको इस तरह से लेके चलेंगे अपनी पेस के साथ, अपनी मर्जी के साथ। और इसमें बहुत अच्छी बात, बिकॉज आई हैव बीन इन टच विद सिंध बोर्ड, आगा खान बोर्ड एंड O लेवल बोर्ड्स, तो इसमें जो आपको टफ टाइम तो नहीं कहूँगा, बट ये जरूर कहूँगा कि आपको जरूर जब आप इवैल्यूएशन पे जाएंगे, आप MCQs करेंगे,
So definitely you have to think well, then you are going to take on the right answer. गलत जवाब होता है तो फिर आपको वो सही जवाब तक पहुंचने में आपको काफी मदद मिलेगी, ताकि एक चीज जो आपकी क्लियर हो जाए, then you can move forward to the next level. So I would like to suggest to all the teachers, please do attend this course and get yourself certified from LUMS and this, and become a trained teacher and become a smart teacher. Over to you, Anand. Thank you so much, Sir Amjad. आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है और कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिलती हैं. And just to see how you implemented these lessons in your classroom, as well as आपने किस तरह से अपने स्कूल में अपने टीचर्स के साथ इन चीजों को शेयर किया, I think that's very inspiring. And I hope that slowly and gradually we can grow to become a community of teachers and educators who are there to help and support each other. Always. So, thank you so much. So I would now like to invite Hina to talk about how to register for the course. And I think, Hina, you will also be telling them about the discount what people have been asking for. So over to Hina. Hello and Assalamu alaikum everyone. I hope I'm audible. So thank you so much, Anam, for organizing this webinar, and for all the participants who've made it and who are engaging on the chat window as well. It's lovely to see everybody's input. I'm just going to quickly take a few minutes to guide you through the course and how you can sign up for the course. So आपको जो एक chat box में भी और ये जो विंडो पे भी आपको जो नजर आ रहा है लिंक, जो पहले भी एक लिंक 5V का शेयर किया था हमने, इफ यू ओपन दैट लिंक, आई जस्ट शेयर दैट वंस अगेन. मैं दोबारा विंडो में कर रही हूँ, सो आई रिक्वेस्ट के ऑल ऑफ यू कैन आइदर कॉपी पेस्ट दिस समवेयर या आप इसको बुकमार्क कर लें ताकि आप लोगों के लिए बाद में इसको एक्सेस करना आसान हो. अच्छा, so before I quickly run through the main window of the course page, आपके सामने अभी जो displayed है वो मैं आपको डिस्काउंट का एक दफा बता देती हूँ कि जब आप currently इस कोर्स की प्राइस है 4999 which is 5000 approximately. However, if you register for this course by tomorrow, like in a day, अगर आप इसके लिए register कर लेते हैं, you get 500 rupees off. So it will be 4499, which is a straight slash of 500. It's an excellent deal. I think कि जितने भी लोग यहाँ पे convinced हैं कि this is the right course for them, this is valuable, they should make use of this opportunity. And if in case you do opt to register for it, नीचे आपको अगर pink box में बैंक की डिटेल्स मेंशन्ड हैं, इट्स अ मीज़ान बैंक अकाउंट नंबर, आप इस पे इसको भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें या इसका आप फोन से पिक्चर ले लें. यू कैन ट्रांसफर ऑन दिस account number and you can share the screenshot on the email address which is support@ilmex.org. So support@ilmex.org पे आपके कोई भी questions हैं about the course, any queries, since I'm looking at the platform which is Ilmex is hosting this course. जितनी भी आपकी interaction है with the course, जो website है जहाँ पे hosted है वो ilmex.com का है. So any queries, course key which I can redirect to knowledge platform and LUMS as well. So we are all working together for making this course accessible for as many people as possible. You can redirect the queries on this email ID. So now I'm quickly going to share my screen ताकि आप लोगों को मैं एक idea करा दूं कि आपने इसके लिए enroll. Hey Hina, so you got muted. आप दोबारा से unmute कर लेना. Okay, just a second. Now am I audible, Namra? Yes, Hina. And is my screen viewable? जो 21st century teaching का page है वो भी viewable है? Good. Okay, great. So guys, in the interest of time, I will just quickly show you the page. So आपको जो हमने अभी दोबारा chat window में जो link भेजा है, उसको आप जैसे ही खोलेंगे, this will be displayed in front of you. This is the entire course page. It is a super comprehensive page. इसमें एक एक detail है.
FAQs हैं, instructors who have helped design this course वो mentioned हैं, सारी outline है, so it's an entire comprehensive guide to this course. So ये आप दो buttons देख रहे हैं. So enroll is specifically for individual learners. तो आप जितने भी teachers यहाँ पे हैं, अगर आप individually अपने आप को enroll करना चाह रहे हैं तो use press this button which is enroll. However कुछ यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो अपने साथ अपने peers को भी register कराना चाहते हैं, या फिर अपना कोई principal हैं या कोई head of training हैं जो अपने staff of their school को in a group more than one more than one users को register कराना चाहते हैं, तो then you go for group enrollment. So once you click on enroll, आप अगर ये देखेंगे यहाँ पे आपको Ilmex का मेन होम पेज मिल जाएगा, नजर आ जाएगा, उसमें आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे, you will enter the details, you will click on join now, आपको एक्टिवेशन लिंक आएगा ईमेल पे. It's a very smooth process. The moment you enter details, it will constantly guide you. आप जैसे ही अपना एक्टिवेट करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा Ilmex के ऊपर. Then you simply have to go back to the same course page जो आपका लिंक आपसे मेन हमने शेयर किया हुआ है. उस लिंक पे जब आप जाएंगे which is 21st century teaching page, तो उस पे आपका I'll just quickly show you. So once you have made your account on Ilmex, you simply go to the 21st century teaching page and then you click on enroll again. इसमें आपका फौरन आपकी कार्ट ओपन हो जाएगी, उसमें आपका शो हो रहा होगा कि यू हैव एडेड दिस कोर्स टू योर कार्ट. आपको ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस की ऑप्शन सारी नजर आ जाएंगी. सो वी हैव इजी पैसा एंड वी हैव क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ऑप्शन एज वेल. So you choose whichever option is convenient for you, you make the payment and उसी वक्त आपकी instant registration within a few seconds or minutes, you will be able to enroll yourself. So it's quickly for group enrollment, आपसे एक form fill in कराएंगे. आप जैसे इस पे click करेंगे, you will see a form that will open up. एक pre-onboarding form है. Namra, is the pre-onboarding form visible? Yes. Okay, so ये simple form है, आपने इसको next करना है. A few details, very few details will be asked of you. You enter these details, कितने लोगों आपने register करना है, and you click on next and you submit the form. That is it. So ये form हमारे पास फौरन आ जाएगा. हम आपसे we'll get in touch with you. We'll take your details. We'll share the registration process. वो भी बहुत simple है, and we'll guide you further. So I hope this is clear. For any questions, you can ask in the chat window before this webinar ends, or the email ID support@ilmex.org. Thank you so much, Namra. Thank you so much, Hina, for guiding us on how to register for the course. Namra, if we can show, so हमारे पास अभी तक जो लोगों ने register किया है and people have started using the course from all over Pakistan. This includes individual teachers as well as schools. And one of the schools that have used this platform is LGS Sialkot. So we would just like to show some feedback from the teachers of LGS Sialkot. So Namra, over to you. Thank you, Namra. So हमने कोर्स के बारे में काफी डिटेल में बात की है, how it can help you, what to expect. So these, for any contact, you can contact our colleague Usman. Most of you here know Usman. Usman and his team, including Mehak, have been in touch with you. So please reach out to us. We are now open to questions, so we can take 10 minutes of questions and answers. So आपके जो भी सवाल हों वो आप chat window में लिख सकते हैं. And Namra, if you can unmute people now, if you can, so आप लोग अपने आप को unmute करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं. Assalamu alaikum, Nimra.
Assalamu alaikum. This is Uzma Samreen Qureshi from Zebesta MC Larkana. ये जो 5E प्रोग्राम है ये आपने कहा कि साइंस बेस्ड है और बिकॉज आई एम टीचिंग द बायोलॉजी सब्जेक्ट तो वो मुझे किस तरीके से हेल्प करेगा अगर ये मैं कोर्स कर भी लूँ तो किस हद तक मुझे ये फ्रूटफुल रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है? बहुत जी फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है मिस उस्मा। बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दिस कोर्स ये है कि आप बच्चों को एंगेज करें और उनको खुद मौका दें कि वो एक्सप्लोर करें कोई भी चीज़ के बारे में। तो अगर आपने सेल्स के बारे में करना है और आपने उनसे कहना है कि वो खुद से अपना एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करें, खुद से उसका आउटकम या उसके आइडियाज़ लिखें और you know come up with their own end goal or whatever for the experiment. This course can teach you all of those things. अच्छा ऑलरेडी मैं जो है क्योंकि मेरी टीचिंग एक्सपीरियंसेस बहुत है ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से अबव हो चुका है ऑलमोस्ट ठीक है तो अब माशाल्लाह मुझे कोर्सेज करने का तो बहुत ज़्यादा है कि लर्न फ्रॉम द 21st सेंचुरीज आउटकम्स लर्निंग आउटकम्स मुझे लेने के लिए बहुत मज़ा आता है कि लाइक मैं भी एक स्टूडेंट हूँ मैं इतना एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है नहीं दिस इज माय बिगनिंग जी लाइफलॉन्ग लर्नर तो दिस इज माय बिगनिंग ठीक है ना तो एक्सपेरिमेंट जो है एक्सपोजर टाइम एंगेज का ये 3 ईज तो मैं अपने क्लास में डेली करती हूँ ये मैं डेली करती हूँ ठीक है आई थिंक दैट्स एक्सीलेंट ठीक है हाँ ये मैं डेली करती हूँ लेकिन ये जो बाकी के जो 2 जो है वो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव लर्न माय सेल्फ हियर सॉरी फॉर द नॉइज इट्स ओके मिस उस्मा इसमें हमारे पास बहुत सारे एक्टिविटीज हैं बहुत सारे आइडियाज हैं कि आप इलैबोरेट किस तरह करें या एक्सप्लोर किस तरह करें और जो केस स्टडीज हैं जो अमजद साहब बता रहे थे हमें केस स्टडीज में देयर आर एडिशनल आइडियाज तो द कोर्स विल बी वेरी यूजफुल कि आपको सिर्फ थियोरेटिकली नहीं बताएंगे हम लोग एक्चुअली करवा के दिखाएंगे नहीं ठीक है इंशाल्लाह I will join your course and I learned something more in a very fun way in a very different way. Thank you very much for providing us such a great platform. Thank you very much. You're welcome. So we have a question from Ikra. Ikra, we have और हो सकता है ये आप लोग में से और लोगों के भी सवाल हो कि क्या ग्रुप डिस्काउंट हमारे पास मौजूद है तो हम बिल्कुल ग्रुप डिस्काउंट ऑफर करते हैं और यूजुअली हम ग्रुप ऑफ 20 पे डिस्काउंट ऑफर करते हैं लेकिन even if you are 3 teachers or 5 teachers who want to take a course together reach out to us हमारे इसके अंदर हमने एक सर्वे लिंक डाला है आप उसमें अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस्मान and his team will reach out to you. Usman, if you can quickly introduce yourself. Usman is a champ behind who makes sure that हम लोग और आप लोग यहाँ पे एक जगह पे मिलके बातचीत कर सकें. So Usman, if you can open your video and introduce yourself to everyone, please. Thank you so much, Anam. Actually, I'm driving. I could not open the video. So let me speak. I hope I'm audible. जी बिल्कुल. We can hear you perfectly fine. जी, thank you so much, everyone, for setting up the wonderful webinar and wonderful stage. जिस तरह से हमारी टीम ने साउथ टीम ने स्पेशली हलीमा एंड महक जिन्होंने स्कूल्स के साथ कोऑर्डिनेट किया और फिर उनको इस वेबिनार के लिए इनवाइट किया तो हेड्स ऑफ टू देम. आई गेस के महक शायद हमारे साथ इस वक्त अवेलेबल हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है.
तो बाकी जैसे आप सभी ने बताया कि इसका प्रोसेस हिना भी अभी बड़ी डिटेल में बता रही थी कि बहुत इजी है, और हम लोग मैं खुद भी और महक भी आपके साथ सभी टीचर्स के साथ सभी पार्टिसिपेंट के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, और हम लोग मेक श्योर करेंगे कि आपकी जो ये जर्नी है हमारे साथ इस कोर्स को रजिस्टर करने की और फिर थ्रू आउट इसको कंप्लीट करने की वो आसान से आसान बनाई जा सके। थैंक यू सो मच। Thank you, Usman. If we have any other questions from the participants, हम एक और सवाल ले सकते हैं. Okay, so since we don't have any further questions and it's already 5 o'clock, मैं आप लोग से जाने से पहले ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब अपनी वीडियोस ऑन कर लें. Let's take a group picture. ये एक यादगार हमारे लिए हम सब के लिए रहेगा that we came together for this webinar, and उसके बाद then you are welcome to go. I would request everyone to please open your videos for a few seconds and उसके बाद आप उनको वापस बंद कर सकते हैं. बहुत शाय ग्रुप है हमारे पास इस दफा. आप कैमरास 2 मिनट के लिए ऑन कर लें प्लीज सब. Thank you, Kisholal and Ariba. I understand कि हम अपने अपने घरों से webinars attend कर रहे होते हैं, थोड़ा सा discomfort होता है, you know, to move and to adjust and to switch on the camera. Yes. Process is the same for all of us as well. आप बैकग्राउंड्स ब्लर करके या बेशक चादर लगा दें पीछे. Okay, I think Namra, we can take the screenshot with the same, and you can tell us that screenshot as well. All right, Ji, thank you so much. Please, we would really like कि आप survey form fill करें, and if you have any questions, also please reach out to us. Thank you so much, Hafiz. Hafiz.